So till now we have covered the phasor diagrams, and then we have covered even how to write the phasor and all these kind of things, isn't it? Velocity equations and all those kind of thing, how when they are going to meet. But today's topic is related with energy of SHM. Means let's suppose if any kind of particle which performs SHM, what will be its energy, that we want to know. Is that clear or not? Basically, so that's what we are going to understand today, how to do it and how not to do it, and then we'll move ahead with this. Okay. So as you know, in physics we have, and since we are studying SHM, we have for all these kind of things only 1 minute. Let me just, yeah. So these energies are of two types basically. One we call it as kinetic energy. Another one is called as potential energy. है कि नहीं? मतलब basically we are going to talk in depth. Yeah, we are going to talk about the mechanical energy of the system because the system is also a kind of mechanical process. किस तरह का process है ये? Is that clear or not? So let us just move ahead. Let us just talk about that. And let us understand what is that. What is the meaning of that? So first thing, as we know that any SSM wave equation is written as x is equal to a sine omega t plus phi. This is my simple SSM equation for any particle which is performing SHM. Isn't it? Let's suppose this is my body which is performing SHM. These are my amplitudes. This is minute plus a minus a, and this is my plus a, isn't it? And then let's suppose if any kind of body starts directly from mean point. Okay, so then this equation, the phi is not, phi is basically 0. So this is my mean point where the particle was kept at t is equal to 0. If it goes towards right, it is sine. If it goes towards left, it is minus a sine omega t, isn't it? This was my relation. Are you able to get me or not? These were my two relations. If the equation, if as suggested as drawn, so x is equal to minus a sine omega t when block goes left, and x is equal to a sine omega t when block goes right. Is that clear or not? And both of them are starting from mean point at t is equal to 0 where they are at mean point. Are you able to get me or not? So let us just bring this, let us just talk about this. So as we know my position equation, now you know from position equation we can even know the velocity. Velocity was given by formula a omega cos omega t plus phi. This was my formula or not? This was my basic formula which we were learning or which we were understanding, a omega cos omega t plus phi. Now look over here, as I know these equations, as I know my velocity equation, position equation, then you know that in physics the kinetic energy is given by formula half mv square, isn't it? So अगर ध्यान से देखो तो अगर हम हाफ एम बी एस, हाँ हाँ हाँ, yeah, so let us just replace this value over here. So this becomes half m a square omega square cos square omega t plus phi. This is my kinetic energy relation of the particle which is performing the SHM. Are you able to get me or not? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से देखो. So the question arises that these since this kinetic energy is following such kind of wave equation, so this kinetic energy will also have some maximum value. Now you know that for any kind of cos or periodic graph, the maximum value of them is just equal to 1, isn't it? What is their maximum value? 1. So this becomes how much? Half m a square omega s square. Now there is one more thing which we call it as the average value of kinetic energy. Which value? Average value. Okay.
which we also denoted by something any kind of average is denoted by two kinds of bar like this, required or not. So if I want to find the average value, that means it will be an integration of all these cos square terms, isn't it? When you will calculate that, it will come as 1 by 4 m a square omega square. We are not calculating it explicitly right now. We are just writing the equation. Is that clear? Is that clear or not? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? So there are two kinds of kinetic energies. Means the kinetic energy equation is definitely written by cos square. What? See. What can be the minimum kinetic energy? That can be only zero or not. Okay, so we got two to three important points. That kinetic energy as formula. The kinetic energy for a body performing SHM is written as half m. Is I'm not sharing my screen? Oh shit! You should have told me earlier. Okay, so okay. Now, look over here. So we have right now, if I just consider, then this kinetic energy has two forms. The first form we got the variation form, that the kinetic energy is written as half m a square omega square cos square omega t plus phi. This is my first formula of kinetic energy, isn't it? ठीक है अब ध्यान से देखो so we got from these two relations that this kinetic energy has two values, one maximum value and one average value, isn't it? Not minimum is always zero. Okay, so the kinetic energy maximum value is half m a square omega square. Minimum is how much? Zero. And another thing is kinetic energy is average value. कौन सी value? Average. That is 1 by 4 of m a square omega square. Are you able to get me or not? We'll get to know how this average value comes. Means it is a whole process of integration that we will not waste our time doing doing over here. Is that clear or not? Now, as you look for the velocity equation, velocity in terms of amplitude is also written as omega root under a square minus x square. ऐसा एक term है ना? So kinetic energy has the second formula, which is given as r m omega square, and if this is a square, so it will become a square minus x square. So this is my time dependent kinetic energy, and this is my position dependent kinetic energy formula. Is that clear or not? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? So how many kinds of kinetic energies we have? Four. So means we got four equations right now. First, the time dependent one, then its maximum and average value, then the position dependent one. Is that clear or not? You can say that the minimum kinetic energy is always zero. If I find the minimum kinetic energy is always basically zero because velocity will be zero over there. The minimum velocity of the minimum particular velocity can be zero. It cannot be. It can be negative, but the square of them ultimately makes it positive. Are you able to get me or not? हाँ. Yeah. So now next thing is, as you know that I can write even omega in terms of k by m, isn't it? So you know that omega square is k by m, isn't it? So I'll replace that over here in the kinetic energy formula. What I will get it is just simple equation that kinetic energy in terms of k is written as half k a square minus x square. This is my one of the another term or the one of the another formula of kinetic energy. So we have almost three to four different forms of kinetic energy and we got to know all of them. Is that clear or not? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? So how many such equations are there?
almost 3. This one is the one more one. Okay, so let us just talk about them in a greater sense. Let us just understand them in a greater sense, how they happen and how they do not. Let us just pick up them and then we'll talk about that. Is that clear? ठीक है, चलो अभी तक कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान से देखते हैं. बेसिकली इफ वी वांट टू टॉक अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी, if we want to really understand this kinetic energy, then we have to give it some kind of uh, form. Then we have to particularly understand about the form, and that's what we are going to do it. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो. मान लो फॉर्म हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म कैसे लेकर आएंगे. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ निकालने से आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी साथ में होती है ना. तो मानते हैं, लेट अस कंसिडर मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0. पहले हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 0. Is that clear or not? And after that, we will talk about that. Consider the minimum value of potential energy to be 0. So, can we say that the maximum value of kinetic energy, what we will get over here, that must be exactly equal to mechanical energy, isn't it? So, whenever your potential energy becomes 0, try to understand that the maximum value of kinetic energy is basically my mechanical energy, which becomes my half m a square omega square. Is that clear or not? So whenever the potential energy becomes 0, you have the kinetic energy as maximum. When the kinetic energy becomes 0, you have the potential energy as maximum. मेरी बात समझ में आई या नहीं है? Yes. So now the point arises that what is the potential energy then? But how you are going to write the equation of potential energy, isn't it? So give the heading potential energy in SHM. How to write the potential energy equation? That's a big question, and that's what we are going to understand right now. मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? So now you know that the force equation is given as F is equal to minus of kx, where x is the displacement from mean position. ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो हम फोर्स को माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स भी लिखते हैं या नहीं लिखते? ऑफ कोर्स लिखते हैं ना. तो अगर हम डी बाई डी एक्स लिखेंगे, अगर हम फोर्स को डी बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे, तो यू नो दैट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. एंड हियर in terms of spring forces, our spring forces are which kind of forces? Conservative only. स्प्रिंग फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं? तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन होती है, सिंपल सी बात बताओ, अगर हम स्प्रिंग फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और यू ऑफ द स्प्रिंग इज रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर और नॉट. पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिखाते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर. देखो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखाया? हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिखाया? हाफ के एक्स स्क्वायर. तो क्या आएगा वैल्यू? हाफ के एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो मालूम है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड. Simple. अरे एक बात बताओ, पोटेंशियल इन द एसएचएम x is represented as what? X is equal to a sin omega t plus phi or not? And the spring potential energy? No, 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 no. I just, you know that the spring potential energy is written as half kx square or not? So just I replace. Uh-huh. What you were saying? Yes, definitely. We are approaching that only. So you know that spring potential energy, this is a time dependent form. In terms of omega, what it will be? Potential energy of the spring. You know that K is equal to
You know that omega square is equal to k by m. Just replace it over here, isn't it? What you are going to get it is half m omega square a square sine square omega t plus phi. That's once again in terms of omega and all. One is kx square, another one is omega, another one is time dependent. मेरी बातें समझ में आई या नहीं है? Is this clear? So these are our two different equations of potential energy. Now, as you know that if we are aware of kinetic energy and potential energy at any time, so we can define also the total mechanical energy at any time. At any time. And that total mechanical energy will be what? Just sum of kinetic energy at that time plus potential energy at that time. Is that clear or not? Kinetic energy in terms of time dependent equation, it is half m omega square a square cos square theta cos square omega t plus phi, and potential energy over that time is half m omega square a square sin square omega t plus phi. ध्यान से देखो तो if I as I getting half m square, yeah, total energy will be written as half m omega square. It's exactly equal to k max, means it's even exactly equal to potential energy maximum when the kinetic energy is zero. Are you able to get me or not? So that means that in SHM, the whole SHM, if I talk about, what is the conclusion of this? Let's just talk about that our whole SHM, which is confined between our two amplitudes minus A and plus A, has a has at every point, as at all of these different points, it's what thing to be constant, its total energy to be constant. इनके सारे के सारे points पे total energy कैसी है बेटा? Always constant. Total energy कैसी है? Always. From this end to that end, the total energy is always constant. They are never ever changing. Means they are always going to be same. Whatever you do, are able to get me or not? Here, kinetic energy can be different, potential energy can be different, but some of kinetic energy and the potential energy at all these points, if we find it out, the whole thing will be same. Are you able to get me or not? So look over there. Let's suppose if I consider one SHM. Let's suppose this is my SHM which we are considering. We can start from anywhere at this point or not. As we know that, let us consider that this is my main point. ये क्या कौन सा point है? तो मैं मेन पॉइंट से भी एक ब्लॉक रख के स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी एक ब्लॉक रख के स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक ब्लॉक रख के स्टार्ट कर सकता हूँ. So listen. So I can start from any point, isn't it? But that will be confined within a fixed amplitude or not? Means the amplitude is not changing, energy of these blocks will not change. So this gives us a conclusion that an SHM of amplitude A can have infinite solutions, can have infinite solutions. Look over there. For this amplitude A, I can have infinite motions of the blocks or not? Yes. So this is what they are saying, that if you have any kind of system, any kind of a bigger block system or whatever, from wherever you are going to start, you should be aware of one thing, one fact, that if there is an SHM, then I can have for a same amplitude many kinds of possible different position equations of the block. मतलब हम इसी एम्पलीट्यूड के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, और हर बार देखना तो एक्स का जो इक्वेशन आएगा वो अलग अलग आएगा. कैसा आएगा? अलग अलग. एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सम अनदर फाई आएगा या नहीं आएगा? अगर तुमने मिड पॉइंट से स्टार्ट किया तो एक्स का वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी. तो ये क्या है? ये सारे इक्वेशंस ऑफ एसएचएम है या नहीं है ना? तो basically they are telling that how the bodies are performing the SHM. These equations are telling what they are, how the blocks are performing the SHM. So basically, if I have any an amplitude A, then I can place the block anywhere on this axis, and the bodies will do here motion here and there.
तो ये क्या है, ये सारे इक्वेशंस तुम्हें क्या बताने वाले हैं, हम बॉडी के सॉल्यूशंस बता रहे हैं ना, कि बॉडी कहाँ कहाँ पे एसएचएम कब कब कर रही है, यही बता रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एम्पलीट्यूड लें तो उस एम्पलीट्यूड में बहुत सारे एसएचएम हम करवा सकते हैं, हमारे मर्जी के ऊपर है हम कहाँ से स्टार्ट करें मोशन। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? Okay, so let us just move ahead. Let us just talk about something which we call it as the oscillation of kinetic energy. फिर उसके बाद अपन और आगे अच्छे से बढ़ेंगे, पहले इसको डील कर लेंगे, तो ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इसको पहले समझ लेते हैं, हाँ। अब एक बात बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी का अपन ने अभी इक्वेशन निकाला वो क्या आया था, दैट काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज टाइम इक्वेशन हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ध्यान से देखो, ये एक पीरियोडिक ग्राफ, पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है? तो बताओ जरा कि जैसे अगर मान लो एसएचएम जो है फ्रीक्वेंसी एफ से ऑसिलेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, कैन यू टेल मी प्लीज? Can you tell me that at if the SHM is oscillating with frequency f, then tell me with what frequency the kinetic energy is oscillating? Think. Frequency is 2 pi by t, yes। मतलब देखो एक एक सोचो सोचो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट्स रियली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। अच्छा ध्यान से एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, हमें हमने क्या बोला, लेट सपोज, लेट अस स्टार्ट दिस, द बॉडी is performing SHM with frequency F. Let's suppose the body is performing an SHM with frequency how much? F। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर SHM फ्रीक्वेंसी F से हो रहा है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy equation is half m a square omega square cos square omega t plus phi. So here, as you see that if it is written in a square term, so we can't talk about its oscillation। हम oscillation के बारे में बात कर सकते हैं क्या? एक बात सिंपल सी बताओ, कोई भी चीज ऑसिलेट हो रही है उसका मतलब क्या है, उसको हमने हमको अगर ऑसिलेशन के बारे में बताना है तो हमें उसको लीनियर इक्वेशन में लिखना होगा ना, किस तरह की इक्वेशन में लिखना होगा? ओके, 1 मिनट भैया, बस क्लास में हूँ मैं, क्लास से नहीं। हाँ, तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो अगर मान लो अगर हम लीनियर इक्वेशन बना के आंसर निकालें या कुछ भी करें तो हमें उससे क्या मिलेगा, ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता चलेगा, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, कभी भी हरदम याद रखना कि वट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, इसमें 1 मिनट, लेट मी जस्ट switch off my mobile phone, too many messages are coming, too many calls are coming, they are distracting me। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, तो एक होता है, सिंपल सी बात है, ये अपन अगर जो मैसेज हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह की इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन है। किस तरह की इक्वेशंस? Linear equations। I'll tell you, I'll definitely explain this how to write this sine theta cos theta। We derived basically over here for the SHM the sine theta and cos theta term or not, है ना। तो ध्यान से देखो,
अगर कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही होती है, इफ एनी काइंड ऑफ बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम, हमने इसका इक्वेशन लिखा था ना, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम परफॉर्म करे तो इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई a आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पे कोई पावर है क्या? यहाँ पे साइन का कोई पावर है क्या? नहीं ना। तो एसएचएम कराने के लिए हमें साइन या कॉस का कौन सा इक्वेशन चाहिए? लीनियर इक्वेशन चाहिए। किस तरह का इक्वेशन? Linear equation. Is that clear or not? So how to get the linear equation to perform SHM? You should first remember every sin square theta and cos square theta can be converted into single sin theta and cos theta. Is that clear or not? तो ध्यान से देखो, अगर हमें लिखना है cos स्क्वायर थीटा को, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखना कि रिमेंबर दैट cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई हाउ मच? 2। क्या लिख सकते हैं? Is that clear or not? So replace it over here in this equation. You will get that kinetic energy equation. Kinetic energy equation becomes half m a square omega square cos square omega t can be written as what this will become 1 plus cos twice omega t plus twice phi divided by how much? 2. So this is my kinetic energy equation or not? अब ध्यान से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज हाफ half of bring this half over here, so it becomes 4 ma square omega square 1 plus cos uh, twice omega t plus phi। यही आएगा ना रिलेशन? बताओ तो जरा, यही है ना रिलेशन? इज दैट क्लियर? अब ध्यान से एक चीज तुम्हें एक अभी इसी डेरिवेशन के थ्रू एक चीज बता रहा। अब एक बात बताओ, अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो अगर हम पूरा कॉस का ग्राफ देखें तो नेट एवरेज क्या है कॉस का? सॉरी, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 समथिंग लाइक दैट, ये टोटल जीरो हो जाएगा या नहीं होगा? वन पीरियड में कॉस की टोटल वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू क्या है? जीरो। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हुआ है या नहीं हुआ? तो ये आंसर आया या नहीं आया? 1/4 ma square omega square। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? Yeah, and next thing is, you look over here. In terms of linear equation, this kinetic energy is, I'll call this half 1/4 as K average, kinetic energy average, plus this term 1/4 ma square omega square cos twice omega t plus twice phi। ऐसा लिख सकता है, नहीं लिख सकता? तो ध्यान से देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ ओमेगा है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इफ इन एसएचएम, अगर मान लो if SHM is there of frequency f, फ्रीक्वेंसी कितना है? f, then kinetic energy is oscillating with how much frequency? With frequency मान लो f dash, that must be exactly equal to twice of f or not? Why? Because the omega of kinetic energy is exactly equal to twice of omega of SHM। Are you able to get me or not? Is that clear? So remember, means here the kinetic energy is not performing SHM। ऐसा नहीं है कि kinetic energy ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बार बार SHM परफॉर्म कर रहा है, it's just oscillating। तो याद रखो, kinetic energy is not performing SHM। ठीक है, it's oscillating between दो चीजों के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बिटवीन 0 एंड 1/2 ma square omega square with frequency how much? 2/2।
Is that clear or not? So our kinetic energy is not basically over here. Uh, Means it's not basically something which is a SHM kind of thing. It's just मतलब देखो हिंदी में अच्छे से बोलते हैं कि भाई सिंपल सी बात याद रखो, एसएचएम का मतलब वो ब्लॉक इधर उधर मूव कर रहा है। जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी इधर से उधर ऑसिलेट हो रही है। तो जो एनर्जी की जो ऑसिलेशन है वो एसएचएम की डबल है। कितनी है, कैसी है? It's double of the SHM. Is that clear or not? The kinetic energy oscillation is double of the SHM oscillation. Is that clear? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? So let us just think about this in a much more greater sense. Let us just bring this. Let us try to draw the graph of this. तो एक बार ध्यान से हेडिंग डाल लो, the graph of kinetic energy and potential energy. तो अपने पास दो टर्मिनोलॉजी मिला, दो तरह के पॉइंट्स मिले हैं, है ना? फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे इक्वेशंस है, पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे इक्वेशंस है। उसके बाद हमने बोला कि एक एसएचएम में बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। दूसरी बात बोली कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो खुद पे खुद कितनी बार ऑसिलेट करती है, ट्वाइस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम। जो भी जैसे मान लो ब्लॉक अगर एक टाइम में एक बार इधर से उधर किया, एक बार ऐसे ऐसे गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बार चेंज करेगी बेटा? टू टाइम्स। हाउ मच टाइम्स इट विल चेंज? Two times. So let us just draw this graph of kinetic energy versus potential energy and see what actually is there. Okay, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है मान लो गुलाबी सी हवा। अब ध्यान से, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक लिमिट तक है। कहाँ तक है? लिमिट विच इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो सम सिंपल सी बात है, जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं? है ना? अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली दिस इज जीरो, आफ्टर दैट आएगा पाई बाई टू, आफ्टर दैट आएगा पाई, आफ्टर दैट आएगा थ्री पाई बाई टू, आफ्टर दैट आएगा टू पाई, आफ्टर दैट आएगा फाइव पाई बाई टू, आफ्टर दैट आएगा थ्री पाई, आफ्टर दैट सेवन पाई बाई टू, ठीक, आफ्टर दैट आएगा फोर पाई। ठीक, यहाँ तक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसा है। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ध्यान से देखो, ये साइन वाला टर्म वेरिएशन है ना? किस तरह का वेरिएशन है? तो ग्राफ कैसा आएगा? सिंपल सी बात है, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पाई बाई टू पे मैक्सिमम, पाई बाई टू पे पाई पे मिनिमम। और ये साइन स्क्वायर है ना, किस तरह का ग्राफ है? मतलब ये बात हरदम याद रखो कि द साइन, अगर अगर तुम, अच्छा ये चीज तो मैंने पूछा ही नहीं बेटा। एक बात बताओ, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा? कैन यू टेल मी? I'll tell you. I'll just draw the graph of sin theta and cos theta. Sin theta is drawn like this way. ठीक, और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। cos थीटा को कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? अच्छा, क्या साइन स्क्वायर थीटा में ऑसिलेशन बंद हो जाएगी? सृष्टि, साइन स्क्वायर थीटा में ऑसिलेशन बंद होगी? एक बात, चलो हम ग्राफ की प्रॉपर्टी बताते हैं। पहली, ऑसिलेशन विल नॉट स्टॉप। सिंपल सी बात है, साइन थीटा अगर हम साइन जीरो पुट करें तो जीरो आएगा, साइन वन पुट किए, साइन वन 30 डिग्री पुट किए तो वन बाई फोर आएगा, ऐसे ही आएगा। बट ऑल ऑफ द क्वांटिटीज विल बी पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव विद अ डिक्रीज्ड अमाउंट। डिक्रीज्ड हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि पहले वन बाई टू टू था, अभी कितना है? वन बाई, जैसे साइन थर्टी कितना है? वन बाई टू। Sin square 30 is how much? 1 by. Is that clear or not? So it got decreased or not? So the
सो द पीच विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, पीच डिक्रीज, और सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो लेट अस जस्ट ड्रॉ दिस ओवर हियर। ठीक है, पीच कैसा हो गया है, डिक्रीज्ड अमाउंट हो गया है। ठीक है, हाँ तो हाँ, तो ग्राफ आएगा, अरे यार बड़ा दिक्कत है यार मेरे को ग्राफ बनाना, मेरे को सबसे वाहियात काम लगता है ग्राफ बनाना। वाहियात मतलब बोरिंग, सी दैट, टू टाइम्स आई ट्राइड बट इट कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक, shit man, shit, I'll just take a Google pic, I will not waste my time. I'll just pick up a Google pic, the kinetic energy graph for SHM diagram, yeah, kind of thing, yes, this diagram. See this, I got my diagram. Yeah, helical stuff. So bad of me. So okay, so I'll just explain from this, okay? ठीक है ना? तो ध्यान से देख, let us just, let me just erase this. So you can see over here, if I just consider the kinetic energy and potential energy, basically we know that the kinetic energy varies with a sine term, and similarly the potential energy varies as half m omega square a square cos square omega t plus 5, है ना? तो जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ होगी वो साइन वाली ग्राफ होगी, ये वाली ग्राफ है ना? ठीक, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसा होगा, ऊपर से नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉस की ग्राफ को फॉलो कर रही है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हम पहले, अगर हम नॉर्मल ऑसिलेशन साइन थीटा का डिस्कस करें तो प्लीज सी दैट इन टाइम, टोटल टाइम t, हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर देयर, basically there is one crest and one trough, isn't it? But when you consider the kinetic energies graph, how many crests and how many troughs are appearing? Count that for one case. Let us just consider one, two, three, and this half and this half, if I will include, they are four or not. So that means if it is a four crest, means four crest or trough, that means how many oscillations are happening? One crest plus one trough is giving me one oscillation or not? So four crest plus, if it is four crest and four trough, sorry, four crest plus trough, that means what? How many oscillations are there? Two oscillations. How many oscillations? Is that clear or not? 1 minute. What is happening? Is that clear totally? 1 minute. A different kind of sound is appearing. Okay. Sorry. Okay. So let us just talk about that. Now, this was the kinetic energy versus potential energy relation. Now, if I want to draw, let's suppose if I just want to talk about the this, अच्छा, और ध्यान से देखो, तो this is my graph, the graph of kinetic energy and potential energy for time dependent case. ये किस केस के लिए है? Is that clear or not? But I can have the graph where I can have something called as position dependent also or not. So let's suppose if I just draw the graph of kinetic energy and potential energy for position dependent things. किस केस के लिए?
Let us just talk about this graph for the position dependent case. So look over here. If I take the position dependent case, okay, this is x, this is my energy equation. Once again, I'll have a limit of the energy equation. Those values can't go beyond that, which is half m a square omega square. Is that clear or not? So if I look into kinetic energy equation, how it varies, half m or half m a square, sorry, omega square a square minus x square. This is my variation of kinetic energy, but potential energy varies like half kx square. Are you able to get me or not? This is my variation of kinetic energy and potential energy or not? है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक पैराबोलिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी पैराबोलिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है ना? तो काइनेटिक एनर्जी को हम टोटली कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी अ डाउनवर्ड पैराबोला और नॉट, and this must be an upward parabola. Hey, do not say that I do not know the downward and parabola. You tell me, if y is directly proportional to x square, then it is a upward. Y directly proportional to minus x square, it is a downward. I'll kill you next time if you say what. Okay, so remember that this is following downward because already here negative sign is present. That means it is varying negatively, but this is varying positive. Is that clear? Yes, so let's suppose if I draw the graph of kinetic energy, it will be somewhat like this way. And if I draw the graph of potential energy, it will be somewhat like this way. ध्यान से देखो, जहाँ पे potential energy maximum है, वहाँ पे kinetic energy minimum है. This is potential energy curve. This is kinetic energy curve. दूसरे पॉइंट देखो, जहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा, मिनिमम. इज दैट क्लियर और नॉट? मेरी बातें समझ में आई? या सो लेट अस जस्ट डू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस. थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं. बोल रहा है कि एक क्वेश्चन लिखो, बोल रहा है इफ अ पार्टिकल फॉलोज x is equal to 3 sin 2t plus 4 cos 2t, then find the amplitude and maximum velocity. Good. If a particle is following x is equal to a sine 2t, 3 sine 2t and 4 cos 2t, then find the amplitude and maximum velocity. Tell me what will be that. तो क्या होना चाहिए? अच्छा, ये काफी एक अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन हो गया ना. हाउ टू सॉल्व इट, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग 3 sin 2t and 4 cos 2t, isn't it? No, 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 nothing like that. Okay, so let me just tell you how to do this, how to understand this. So you know that basically the SHM equation is just a sine omega t
plus 5. That's my SHM equation. The displacement equation of a SHM or displacement equation of a particle performing SHM. Is that clear or not? पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा मजा आएगा. Displacement of a particle performing SHM. अब ध्यान से देखा जाए तो this is not in this form. So how to make it appear in this form? There are two ways. Listen, there are two ways. If x is in the form of a sine omega t plus b cos omega t, if this form is given to you, then write a and b as r. You can take r cos phi and b as r sin phi. एक हम terminology, we are considering this, just we are considering this. Is that clear or not? We do not know what it is. We just do not know what it is. Just we are considering it. At the end, you will get to know what the meaning of this is. Okay. Now, when you will get this, you can replace the SHM equation. X will become r cos phi sin omega t plus r sin phi cos omega t. ध्यान से देखो, तो this is written as sin a cos b into sin b cos a or not. This can be converted as r sin omega t plus phi, and we get our SHM equation or not. So if I have this form, just try to write a and b as r cos theta and r sin theta, where the phi will be represented as phase difference. मेरी बातें समझ में आई या नहीं है? Now you look over there, you can still, the condition arises that what is this value of r then? Then you do one thing. You take a square plus b square, it becomes just r square. So what is r? R is nothing but root under a square plus b square. मेरी बात समझ में आई या नहीं है? What is this phi? That's also a big question. So do not do. Just take sin phi by cos phi. It becomes sin phi by cos phi. R and R will get cancelled. So it will become just b by a or not, which is just equal to tan phi. Is that clear? So you got to know that if this is the form, convert this form into this strategy of R, and then you get the answer. Okay. So just like in the previous question, we are given with x is equal to what was that, 3 sin 2t plus 4 cos 2t, है ना? तो ये सिर्फ इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा टी का वैल्यू दिया हुआ है ना, 4 को मान लो, 4 को मान लो, हमें हमें अभी ध्यान देना है, ठीक है? कॉस वाले टर्म को बी मानना है ना, तो बी वाला टर्म है आर साइन फाई, तो आर साइन फाई का वैल्यू क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया आर कॉस फाई. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये प्रोसेस, ये देखो इंटरचेंज नहीं कर देना, अगर तुमने इंटरचेंज किया तो इट विल बी टू मच मेस्ड अप. इज दैट क्लियर? ठीक है, डू नॉट चेंज, डू नॉट इंटरचेंज. फॉर साइन वी हैव टू राइट कॉस, फॉर कॉस वी हैव टू टेक साइन. इज दैट क्लियर? a in sin a plus sin a cos b into plus a cos a sin b is equal to sin a plus b. या या तो ध्यान से देख, तो x की वैल्यू अगर इस तरह का फॉर्म है तो व्हाट इज दैट, r sin omega t plus 5, where r is written as what, root under a square plus b square. A is 3, b is 4, so root under 3 square plus 4 square, how much is that, 5. And so x is equal to 5 sin omega t plus 5. Phi is what, tan phi is equal to b by a. This is b, that is a, 4 by 3 now, that is for which angle, 53 degree I think so. Yeah, so phi becomes how much, 53. So sin omega t plus 53. It's asking about maximum velocity. You know that v max is just amplitude a into omega or not. So amplitude is r
which is 5 into omega, which is 2. So 5 into 2, which is how much? 10 meter per second. Nothing, just we wanted to know the SHM equation. The phi is telling us that from where the particle has been started. We think that it has been started from mean point, just looking these equations, because it is just sine omega t cos omega t. So people will think that it is started from t is equal to 0 from mean point. But that's not true. Actually, it is having a phase difference of how much? 53 degree. There is an x naught value over there. Is that clear? मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, so this was related to all of your kinetic energy and all these kind of things. The point is, what I will do, we have to write the SHM equations in a rigorous way now. Means the problem to write the time period of all these kind of things. So what I will do is, I'll